Hello students, today's topic is coordinate geometry. It's a very important branch of mathematics. In general, we use it to describe the position of an object. For example, let's say you have to describe the position of a table lamp on your study table. So you'll say that I have kept my table lamp on the top left corner of my table, okay, or top right corner of my table. So here you are using two things, either the top or the bottom side, or left or right, correct? Let's take one more example here. It is showing a, if you see क्या show किया हुआ, street है, street numbers हैं, house numbers है, right? Okay, there is a main road going from west to east. Okay, west and east. If you see now, the street numbers are there: street 1, street 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, and on every street there are house number. Let's have to locate house number. Let's say here is A, right? This is A. So where is it? It is on the street 6, house number 4. Yeah, so you have A is located where? Street 6 and house number 4. Let's say one more house I have over here. This is which one? Let's say B, house number B, or house of Ajay, street 5. So that's street 5 and house number, let's say shortcut 5. Okay, let's say we have Deepak or Deepika ka house hai ye, so she is on street 1, house number 4. So this is the way you locate the houses, students, correct? ये दीपिका का हाउस है एंड ये अजय का हाउस था. लेट्स से ये रंजन का हाउस है. ओके, सो वी लोकेटेड देयर हाउसेस. दिस इज द वे you find your friend's house also, right, in your locality. You might have apartments, so you have the building numbers A, B, C, D, and the floor number and the house number, right? That's how you locate it. So that's a part of coordinate geometry only. Okay, students. Now let's say one more thing. We'll take an example. We have the seating plan in the classroom. Okay, so let's say we have the rows, row 1, row 2, 3, 4, 5. These are the rows in your classroom, and these are the columns, column 1, 2, 3, 4, 5. Let's say the student names, we have Himanshi, we have Varshini, we have Ansh, okay, and let's say we have Ariana, Neva. So where are all these students sitting? Let's say we have Himanshi sitting over here, we have Ansh sitting over here, we have Ariana here, Neva is sitting here, and let's say Varshini is sitting here. Okay, and the teacher is over here. There is the position of the teacher. Okay, let's find out where is Himanshi sitting. Himanshi is sitting in 5th row. This is the row number and that's the column number, 5th row and 5th column, correct? Where is Varshini sitting? In 1st row and 2nd column. Where is Ansh sitting? 3rd row and 1st column. Where is Ariana sitting? 4th row and 3rd column. And where is Neva sitting? She's sitting in 1st row, 4th column. So you need two things over here, correct? This is the position of Neva, Himanshi. You can check it out. Yes, students. Now, how do we represent it mathematically? Now we should have some way to represent it in the two-dimensional plane. Okay, so they all represent, if you check, Himanshi is a point, basically it's a person, so let's say it's a point. Yeah, Varshini is a point, Ansh is a point, Ariana point, Neva point. Clear? Now these points have two values for row number, column number, row number, column number, correct? So let's say we represent them as, यहाँ पे भी अगर देखो तो the street number, house number. Let's say we represent them as two values, x and y. Okay, let's say x and y. This is the way we represent point. Now a point is represented by two coordinates, x and y. Let's see how in our coordinate plane, xy plane, or Cartesian plane. You people know how to represent these numbers, right? We represent these numbers on where? Actually, these numbers are represented on number line, right? But we have two things. We have a pair. So we need a pair of number line also. We need a pair of number line also. Yes, students, or no? And we have rows like this, column like this, correct? We have rows going horizontally, column going vertically. So we need two number lines. One is the horizontal number line. Okay, for our Cartesian plane, we need two number lines. One is the horizontal one, number line we take, and another we take vertical number line. Okay, and they both are perpendicular to each other, correct? We place them in such a way they both are perpendicular to each other
and they intersect at one point. Let's see how. Let me draw it for you people. The number line. So I'll take it over here, and one more line vertical I said, correct? So we have number lines. Okay, two number lines intersecting at 90 degree, both of them. Let's name them. One is horizontal one को हम बोलते हैं x dash, right? What do we call the horizontal one as? x dash. y को vertical को बोलते हैं y dash. Okay, so horizontal number line we represent using x dash. इसका name होता है क्या? x axis. Okay, vertical number line y dash. इसका name is again y axis. Okay, both are perpendicular to each other, intersecting at कहाँ पे intersect करनी चाहिए दो number lines? If you have number lines में एक common बहुत सारे common point होते हैं, but they intersect at one point called as origin. Okay, 0 0 पर कहाँ पे intersect करती है? 0 0 वाले point पे, right? So we make them intersect at origin. So that's the origin. Now you see here there are four equal parts only, 90 degree, 90 degree, 90 degree, 90 degree, correct? And origin is represented by capital O. I forgot to mention. Now this first part we call that as first quadrant. Four equal parts over here, so we call them as quadrants. First quadrant, and we go anti-clockwise direction. This is second quadrant. Okay, this is third quadrant, and this one is fourth quadrant. Okay students, I hope this part is clear. First, second, third, fourth anti-clockwise जाना है. First, second clockwise नहीं move करना please. So we have two axes, x and y. X is the horizontal one, y is the vertical, and intersection point is origin O. Clear? I hope this is clear the way we represent the axes over here. Now let's move on to how do we represent a point on the coordinate plane, in the coordinate plane. So let's learn about that. So as I mentioned in that rows and column wala part mein, we have 2 points. We have two ways, two things to be represented, x and y, correct? We have x and y. Now what is this x called as? X is called as x coordinate. x का क्या नेम है? इसमें x y के अंदर x को बोलते हैं x coordinate, y को भी से y coordinate. इसका एक और स्पेशल नाम है x coordinate का एब्सिसा, and y coordinate का नेम है ordinate. Okay, what are these actually? Let's understand them by again drawing a xy plane. छोटा सा xy plane draw कर लेते हैं. Let's see, here I have drawn it. Okay, again this is your x-axis, horizontal one, y-axis, vertical one, meeting at O. Now let's represent 1 2 3. in number line है तो आपको पता है number line में 0 के right side positive numbers and on the left side negative numbers, and when we take vertical number line तो 0 के top में positive numbers, okay, origin के top में, and origin के bottom में you will have negative numbers. अब I have to represent a point. Let's say ये एक point ले लेती हूँ मैं इधर. Okay, let's say this is point A. Now this point, how far is it from x-axis? ये x-axis से कितना दूर है? यहाँ से अगर देख रहे हो तो x-axis से कितना दूर है? डिस्टेंस इधर से काउंट करो तो 2 units, right? How far it is from x-axis? 2 units. How far it is from y-axis? Y-axis से कितना दूर है? तो 0 से 3, correct? So the distance, the perpendicular distance from y-axis, perpendicular distance from y-axis is your x coordinate. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x coordinate क्या हुआ? How far it is from y-axis? y से कितना दूर है ये?
देना तो 1 2 3 राइट, 3 पॉइंट्स 3 यूनिट्स, नॉट 3 पॉइंट्स 3 यूनिट्स। यहाँ से देखो कितना दूर है एक्स एक्सिस से, दैट इज कॉल्ड योर वाई कोऑर्डिनेट, 1 and 2 ओनली राइट। सो दिस इज हाउ आई रिप्रेजेंट द पॉइंट 3 2। ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 and 2, इट इज़ 3 यूनिट्स फार फ्रॉम वाई एक्सिस, 2 यूनिट्स फार फ्रॉम एक्स एक्सिस। ओके, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस from x-axis, yeah. So perpendicular distance from y-axis is x-coordinate abscissa, perpendicular distance from x-axis is y-coordinate ordinate, right? This is how, let's say this point, एक ये point लेते हैं यहाँ पे हम, let's say I have taken this point, ये x-axis से कितना दूर है, y-axis से कितना दूर है, अभी पहले हम लेंगे y से कितना दूर है, y से -3 पॉइंट्स दूर है, करेक्ट, और x से भी -3 पॉइंट्स दूर है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए -3 क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, सो वी टॉक्ड अबाउट हाउ वी रिप्रेजेंट अ पॉइंट। सो पॉइंट हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करोगे, x एंड y कोऑर्डिनेट सिस्टम में x पहले आएगा, y बाद में आएगा। x इज हाउ फार इट इज़ फ्रॉम y एक्सिस एंड y कोऑर्डिनेट इज हाउ फार इट इज़ फ्रॉम x एक्सिस, क्लियर है। नाउ लेट्स से, और यहाँ से पता चल रहा है, इसको ऐसे पॉइंट कर रहे हो तो ये 3 पे आ रहा है और ये 2 पे आ रहा है, करेक्ट। सो 3 इज एक्स एक्सिस पे है तो 3, ये 2। नाउ लेट्स से मैंने एक पॉइंट लिया, ये 3 इधर खाली, लेट्स से दिस पॉइंट इज, ये बी था, ये सी है। अब ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर दिखा रहा है, एक्स एक्सिस से 3 पॉइंट्स दूर है, वाई एक्सिस से तो दूर है ही नहीं, इट इज़ ऑन वाई एक्सिस, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये तो वाई एक्सिस के ऊपर ही है ना, तो वील से दैट इट इज़ ऑन y-axis. So we have point can be on axis, right? Okay, यहाँ पे ये कौन से quadrant में दिखा रहा है, if you check this is in first quadrant, ये दिखा रहा है second third quadrant में, right? So we can have points on x-axis, y-axis, first quadrant, second, third, fourth, anywhere, right? So let me just draw one more after this. First over here, let's solve this question and identify the points over here. सो हेयर डी, अभी यहाँ पे डी देखते हैं, द नंबर्स आर इज देयर, ये नो, चलो डी से स्टार्ट करते हैं हम। डी का पॉइंट क्या है, अभी डी अगर आप चेक करो, इन्होंने डॉटेड लाइंस बना के दिया आपको, डी में एक्स कोऑर्डिनेट 6 आ रहा है, राइट, सो ये 6 हुआ, एंड वाई कोऑर्डिनेट ये टच कर रहा है 2, राइट, तो इसका कोऑर्डिनेट ऐसे बन गया, करेक्ट। और ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, इफ यू चेक, दिस इज इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, दिस इज इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेट मी राइट, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, third and fourth. Okay, now let's go in anti-clockwise direction only, L. Now let us check L. L को अगर आप चेक कर रहे हो, यहाँ पे L है, L सबसे पहले तो कहाँ पे है, it is not in any quadrant, it is on y axis के ऊपर है, कहाँ है ये y axis। अभी इसका x तो कुछ है ही नहीं, because if you see it is on y axis, तो इसका x क्या हो जाएगा 0, right, और y axis पे कहाँ पे है, on 5, write it like that. Now B पे आते हैं, let's come to B. बी चेक करते हैं, इसका x आ रहा है -5, राइट, एंड इफ़ यू चेक इट, इट इज़ 2 ओवर हेयर। सो हाउ फार इट इज़ फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये देखो, तो -5, तो वो उसका x कोऑर्डिनेट हुआ, राइट, और x एक्सिस से कितना दूर है, वो उसका y कोऑर्डिनेट हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। लेट्स मूव टू m, m देख लेते हैं, m तो कहाँ पे है, ऑन x एक्सिस इट इज़, राइट, यू कैन सी m इज़ ऑन एक्सिस, x एक्सिस, एंड कोऑर्डिनेट -3 है, y 0 हो गया। अभी ऑब्जर्व इट ओवर हेयर, व्हाट ऑल आई एम टेलिंग। नाउ लेट्स गो टू h, h कहाँ पे है, h इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट, करेक्ट, एंड द कोऑर्डिनेट्स x किधर है, इसका -5 पे टच हो रहा है इधर, और ये -3, क्लियर, ओके। लेट्स गो टू e, e अगेन इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इट इज़, इफ़ यू चेक, इट्स -3 and -5. Okay, let's move to more points. We have, yes, we have more points over here. We have I'll write it over here only. We have G, let's say G, if you check G, it is it is 2, not erasing, so I'll write it again, it is 2 comma, if I say -4, right, it is 2 and -4, erase करके एक बार फिर से लिख देते हैं, G is 2 comma -4, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। लेट्स गो टू सी, सी इज़ अगेन, इफ़ यू चेक, ये 5 पे आया है एक्स कोऑर्डिनेट, और ये -5, राइट, अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो आई होप दिस इज़ क्लियर स्टूडेंट्स, हाउ वी रिप्रेजेंट द पॉइंट्स एंड चेक हाउ दे आर ऑन विच एक्सिस, ओके।
to get the coordinates of point is very important. Plotting also we have to do. We'll try that in next video. Now let's come over here. You have to tell by just checking that in which quadrant or on which axis do each point lie. Okay, so इससे पहले let me just show you one thing. एक पहले एक छोटा सा ये बना के I'll just tell you one thing. For all the points, again this is my x-axis and this is my y-axis. Students, this is origin. Now let's say फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होते हैं, द पॉइंट्स दैट आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो वी रिप्रेजेंट देम एज एक्स वाई, दोनों पॉजिटिव. अभी कोई भी पॉइंट दिख रहा है यहाँ दोनों पॉजिटिव, दैट मीन्स आपको जस्ट देख के बताना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है. ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है इधर नेगेटिव होता है एक्स, ये नेगेटिव साइड है, आई राइट हेयर. ये एक्स का पॉजिटिव साइड है, राइट. ये भी वाई का पॉजिटिव है इधर टॉप ऑफ ओरिजिन, बॉटम में इधर ये नेगेटिव हो जाता है, राइट, वाई. सो अभी इधर क्या होगा, x नेगेटिव है तो सारे पॉइंट्स आर इन दिस फॉर्म, y पॉजिटिव. नीचे आके y नेगेटिव हो जाता है. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x इधर नेगेटिव ही साइड है तो नेगेटिव एंड नेगेटिव. इधर भी देखोगे तो व्हाट विल हैपन, x पॉजिटिव y नेगेटिव. करेक्ट. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ व्हेन अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा तो वो किस फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि एक्स के ऊपर है, एक्स कोऑर्डिनेट तो रहेगा, या तो प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा, बट वाई हमेशा ज़ीरो. व्हेन अ पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस देन क्या होगा, एक्स हमेशा ज़ीरो क्योंकि वो वाई के ऊपर है. यस, एक्स है ही नहीं तो वाई का वैल्यू रहेगा या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, और एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो रहेगा. ठीक है. नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन. अभी आपको सिर्फ देख के बताना है. -2 and 4, -2 4 चेक कीजिए यहाँ पे, -2 and 4 ये वाला पार्ट है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, राइट. 3 - 1, 3 - 1 ये वाला हो गया तो दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके. -1 0, -1 0, एक कोऑर्डिनेट जीरो है तो इसका मतलब किसी ना किसी एक्सिस के ऊपर है. क्या जीरो है, y जीरो है तो एक्स एक्सिस है, बट एक्स एक्सिस का कौन सा साइड, नेगेटिव ऑफ एक्स, राइट. करेक्ट ना. सो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है. कौन सी एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस. इधर आ जाओ, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, ये याद रखना हमेशा. करेक्ट. ओके. नाउ यू कैन लोकेट देम ऑल्सो. एक बार प्लॉट भी कर लेते हैं. चलो, वी हैव अ क्वेश्चन ऑल्सो टू प्लॉट, सो लेट्स प्लॉट इट. लेट अस प्लॉट दीज पॉइंट्स. यहाँ पे ले लेती हूँ मैं. फाइन. एंड इट्स मैक्सिमम गोइंग टिल विच वैल्यू, -5 तक जा रहा है वाई में. ओके, हो जाएगा इतना आई थिंक, राइट. Say we have x, y, y dash origin. So let's say 1 2 3 4 5. You will be plotting on graph, students, right? And I think you people have graph book to do these things. -2, -3, -4, -5, and here let's take 1 2 3. Hope 4 now. Let's see the points. What are the points? -2 4, अच्छा it is there. Let me just इसको थोड़ा सा और प्रोड्यूस कर लेते हैं यहाँ से. यहाँ पे 4 और ले लेते हैं हम, राइट. ओके. सो वी हैव, लेट मी राइट द पॉइंट्स हियर. -2 4, वी हैव 3 -1, -1 0, 1 2 and -3 -5. So let's plot them. So we have -2 and 4. So -2 means it will go to -2 इधर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा. सो -2, लेट्स टेक इट अप, स्ट्रेट लाइन से जाना है आपको. एंड 4 हेयर, सो यू विल प्लॉट इट हेयर. या -2 4. देन वी हैव व्हाट, 3 -1. सो 3, x is positive, y negative, so we'll go here 3 and -1 here. Okay, so this is your 3 -1. Then -1 0, x negative, -1 and 0. तो कहाँ पे हुआ ये, इट इज़ ऑन एक्स एक्सिस. या दिस इज -1 0. देन 1 2, 1 2, x is 1, y is 2, 1 2, and then we have -3 -5. -3 -5 will go over here, so we need one more point, -5. No, not here. So sorry, -3 -5, -3 here,
and minus 5 from here. Okay, so this is minus 3 minus 5. पहले x लेंगे and then y, right? So I hope this is clear, students, how I plotted. So you have to do it on graph paper, not like this. On plain sheet पे नहीं करना, please. Do it on graph paper. So I hope the basic concept of coordinate geometry is clear with you. We have the two axes perpendicular to each other meeting at origin. Okay, and we plot points on it, and point is represented by x, y. We have quadrants, everything. Please brush up, revise it again. Then in the next video, we'll come with the distance between the 2 points. Okay, that's the formula you have. The midpoint of the 2 points and how to calculate the distance between this. So ये दो points है, इन दोनों points के बीच में जो distance है, how do you calculate that distance? We will do a formula related to that. So till then, practice, and we will see you in next video.